वेलकम बैक. आप देख रहे हैं नो रिजर्वेशंस एंड ऑफ कोर्स अब वक्त आया है हमारा WAAA राउंड, यानी कि बस जैसे होता है WAAA वो चल रही होती है, आपको तेजी से उसके ऊपर छलांग मारनी पड़ती है. तो that's why this is called the AAK round. And also because my name is AAK, Aisha Alam Khan. So we gotta make the connection. And so the whole concept is कि I'm gonna ask you a question, और जो पहली चीज आपके दिमाग में आए आपने उसी तरीके से आपने जवाब देना है. Okay. इस पे कोई आपने टाइम नहीं लेना, सोचने का वक्त नहीं है. ठीक है? सॉरी. हाँ. वक्त कम, मुकाबला सख्त. Okay. आपने मुझे ये बताना है कोमल रिजवी कौन है? लड़की. हाँ? लड़की है. That's it? Boring. Sorry. No. Boring. You said the first thing that comes to your mind. That's the first thing. Ladki. Okay. She's, I don't know, sweet. I really... What do you want me to say? I mean... Okay, Tipu's बहुत हंस रहा है. Okay, fine. ठीक है. The highest point of your career? BPLOA. BPLOA. हाँ. That was a very popular show. Yeah. Your idea of romance? Moonlight, beach, flowers, candles. Oh, the very cliche. I'm very romantic at heart. Okay, ठीक है. Good things to know. So for any of you out there who's going to be the man, the good thing to know, good information coming out here. In your opinion, the most overrated Pakistani singer? Honestly, there are a few people out there that don't deserve the attention that they get because the work that they do. Name me one. I would feel maybe Shazia Khushak. One actor or actress जिसके साथ आपकी मतलब जो भी रोल हो, you would love to work with him. इसके साथ बस मैंने काम करना है. Mel Gibson. Mel Gibson. I know he's a bit old for me, but I would do anything to get a role with Mel Gibson. He's a brilliant actor. In Pakistan? Like, in Pakistan, there's no one I would do anything to be in a role with. But yes, I would like to work with Shaan. Okay, all right. I'd like to work with... I've already worked with Talat Saab. He's brilliant. So Shaan, हो गया. ठीक है. Shaan, we got Komal here. She's making a comeback. If you need have a role there, please. Okay, the most desirable man, in your opinion, and you can't say Mel Gibson. He's done. Brad Pitt. Okay. He's hot. अच्छा, Brad Pitt, Mel Gibson को जरा आप मतलब वो so cliche. I am so cliche. आप बर्गरों की बात कर रहे हैं, देसी कबाबों की भी बात कर रहे हैं. मतलब जरा पाकिस्तान की तरफ भी आइएगा. यहाँ भी माशाल्लाह काफी मतलब खुश शक्ल लोग हैं. Who do I think is really desirable? Him, Tipu. नहीं, ये तो मजाक हो गया ना. मुझे अपना No, you definitely. नहीं यार, ये मुझे पता नहीं, लग नहीं रहा यार. मैं सोच नहीं रहा. I'm not feeling it. Where's the love? All right, okay. She wants to escape with this one. We let her go away with that one. The strangest rumor, मतलब लोग माशाल्लाह काफी अफवाहें फैलती हैं लोगों के बारे में. That you heard about yourself, अपने बारे में. That I'm Saif Ali Khan's girlfriend and he's bought me an apartment in London and taking me shopping on Oxford Street. All right, okay. आपकी 3 सबसे गंदी आदतें. I find it really difficult to wake up in the morning. Okay. And my dad it really upsets him. Okay, I wake up at 12, 11, 1 sometimes. Yeah, so. Okay. Second habit of mine that I really hate is I really like food. Okay. Like, I really like food. And you know how it is. Yes. We have to be careful with what we eat. We have to watch our calories. And I watch them for 3 or 4 days. And then the 5th day... It's been a struggle. I mean, I know this is something, a challenge, मतलब मुझे भी बड़ी मुश्किल होती है, जैसे कि आप सबको पता है, मतलब कभी इंसान फूलता है, फिर मतलब, it's a constant struggle. It's a constant effort, yeah. नहीं, Tipu, you can't say this. I'm sorry, you don't qualify. Okay, आप डंडी की तरह... नहीं, इनको भी तो watch करनी होती होगी डाइट, या... मेरा आपको पता है, शादी के फौरन 20 दिन बाद ऐसे पेट निकला है कि आपको ख्याल है. मेरी जिंदगी में कभी पेट निकला और मेरी बेबे बड़ी खुश रहती है. पूरा पेट निकला है. I swear. और मैं कह रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं, और इतना सा होता मेरा चूंकि स्किनी होना तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था ना. क्या हो रहा है भाई? और मैं अभी से एक टाइम के खाने पे आ गया हूँ. Can you believe this? We have to चाय कम कर दिया मैंने, पानी पी रहा हूँ, ग्रीन टी पी रहा हूँ, एक टाइम का खाना खा रहा हूँ. खुशी की निशानी है. हाँ, खाते पीते घराने इसमें मेरी बेबी का बड़ा कमाल है, बड़ा बहुत अच्छी तरह ख्याल. Okay, now since you're single again, the best part about being single? The independence, for sure. The most embarrassing moment of your life? I don't think
that I've had a very truly Are you serious? humiliating or embarrassing moment. Like with family and friends, yeah, I do sometimes stuff. Okay, your biggest regret, सबसे मतलब जो पछतावा. My biggest regret is quitting showbiz when I quit, because I was getting a lot of offers which could have been really big if I had आज done them. कोमल रिजवी शायद कहीं और पहुंची होती है अगर आप I wouldn't have to do it all over again, the beginning. But yeah. ठीक है. टीपू 3 लफ्जों में अपने आप को डिस्क्राइब करें. मस्त, लापरवाह ते एंटरटेनिंग. बिल्कुल सही. ठीक है.